Delightful morning, students. I hope you all are great at home. Today I am going to discuss about chapter 6, that is introduction to Krita. As you know that we have covered these topics starting Krita, component of Krita, creating new files, and today we will cover topic that is adding an image and selection tool. Now how to add an image. Click on the option in the file menu. You can note this point 1, 2, 3. How to adding an image. Like this, open an image dialog box, select the image you want to insert. Okay, once the image is added, you can add it using various tools available in the toolbox. Now our selection tool come in handy. If you want to alter any section of an image, you can use selection tool, rectangular selection tool. This is rectangular selection tool is used an image part of the rectangle for retouching or perform cut, copy, paste. अगर आप एक इमेज का पोर्शन, एक स्मॉल पोर्शन कट या कॉपी करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ रेक्टेंगुलर टूल्स. ओके, एंड यू कैन नोट दिस वन 1 2 3 4 फॉर रेक्टेंगुलर. एंड एलिप्टिकल टूल is allow to elliptical circular area of an image. Select elliptical selection tool from the toolbox, drag the left mouse button on the image. अगर आप एलिप्टिकल एलिप्स फॉर्म में अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एलिप्टिकल टूल है. आउटलाइन सिलेक्शन टूल में वर्क्स एज ए फ्री हैंड टूल. दिस टूल इज यूज्ड व्हेन यू आर वर्किंग विद पोर्शन ऑफ एन इमेज. अगर एक इमेज का पोर्शन अगर आप लेना चाहते हो इसके लिए कौन सा टूल है? आउटलाइन सिलेक्शन टूल. ठीक है, यू कैन नोट दिस पॉइंट 1 2 3. ओके, elliptical maybe like this 1 2. And similar selection tool make selection of by selecting on point of color. In simple word, this tool is used for quick selection of area. अगर अपने क्विक सिलेक्शन करने के एरिया की तो इसके लिए आप क्विक सिलेक्शन सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल है. आपने कैसे करना है? क्लिक टूल बॉक्स से सिमिलर कलर सिलेक्शन, ये इसका सिंबल है. ठीक है, प्रेस लेफ्ट बटन, क्लिक ऑन एनी पॉइंट ऑफ कलर. यू कैन फॉलो दिस पॉइंट 1 2 3 4. ओके, दिस इज योर now editing tool. This is crop tool. अगर आप open an image, select crop tool on the toolbox. Used to select specific area that you want to focus and remove. अगर एक specific area को आप remove करना चाहते हो then you have to use crop tool. Follow these points 1 2 3 4. Okay, and this is gradient tool. It creates a blend of 2 or more color. ठीक है, open and select the outline tool from toolbox using this tool. Next, select gradient tool from the toolbox. To select gradient of your choice, click on the gradient tool. Okay, this is your gradient tool. Follow this point 1 2 3 and 4. Okay, now our smart patch tool is used to remove unwanted object. अगर आपके इमेज में unwanted objects हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? स्मार्ट पैच. दिस इज योर आइकन एंड फॉलो दिस पॉइंट्स 1 2 3 4. एंड क्लोन टूल इन क्रीटा यूज फॉर वन एरिया ऑफ एन इमेज कॉपीड समवेयर. अगर आप एक एरिया को इमेज में पर्टिकुलर अदर लोकेशन पे लेके जाना चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? क्लोन टूल इन क्रीटा. क्लिक ऑन ब्रश प्रीसेट पैनल, स्क्रॉल टू फाइंड द क्लोन टूल. यू फॉलो दिस पॉइंट्स 1 2 3 4. नाउ आई विल शो यू द प्रैक्टिकल हाउ वी कैन परफॉर्म इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू द स्टार्ट मेन्यू, देन click on this point, then click on application software, that is Krita, and Krita will open. Now I will give you the practical how can add how you can add image. First of all, click on file, then open, click on open button. Here it is an image png file, and double click, this will open. Okay, now rectangular selection tool, here it is your rectangular, this is rectangle tool, and you can select here. Okay, first of all I will open a new project, create, this is new project. Now file, open, it is open. Okay, this is rectangular tool. And now the rectangular tool, and now here it is elliptical. This is your rectangular, this is your elliptical tool. If you want to select an ellipse forms, this is your elliptical tool. Now the outline selection tool, here it is free form selection tool. If you want to select some area, use this tool. This is outline selection tool. This will outline freehand selection tool. Now I have covered
this tool, rectangular, elliptical, outline, similar color selection tool. Here it is an similar selection tool. This is similar selection tool. If you double click, then similar color, जहाँ जहाँ पे आपका similar color होगा वो portion select हो जाएगा आपका, ठीक है. And now editing tool. Editing tools में क्या है आपका crop tool. Here it is an crop tool. Crop tool is our this is your crop tool. If you want to आपने जितना पोर्शन आपने क्रॉप करना है उतना पोर्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. एंड नाउ डबल क्लिक, इतना पोर्शन आपका क्रॉप हो जाएगा. नाउ ग्रेडियंट टूल, आवर ग्रेडियंट टूल्स, आउटलाइन टूल, ग्रेडियंट टूल इज here it is our gradient tool. This is our gradient tool. Okay, now gradient tool after smart patch tool. स्मार्ट पैच टूल क्या है? अगर रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमारा टूल्स कौन सा होता है? ये वाला. दिस इज योर स्मार्ट पैच टूल. ओके, दिस इज योर स्मार्ट पैच टूल. एंड क्लोन टूल, अगर हमने एक की कॉपी अगर हमने लेनी है एक इमेज की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोन टूल. यू कैन क्लिक ऑन द ब्रश प्रीसेट पैनल एंड रिमूव. दिस इज योर clone tool. You can see here, this is your clone tool. Okay, I have covered these topics, that is adding image, selection tool, editing tools. Okay, thank you students. If you have any query, you can go through these topics. Thank you.